sir. Darya, Yes, sir. you've done many problems on shortest distance between two curves. कुछ 5 किए थे शायद, कुछ around 5. हाँ, तो 5 प्रॉब्लम तो पूरी बुकलेट में नहीं है यार, तो सारे कर लिए ना इधर. Exactly, that was not the part of tangent normal. हाँ सर. हाँ बोलो. सर वो जो मैं कह रहा था, क्या कहते हैं, लाइक आप जो कह रहे थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, सर उसका मैंने बनाया कुछ जो मैं बोल रहा था, सर वो आपको भेजू क्या? नहीं, क्या बनाया था तुमने? सर मैं कह रहा था ना कि आप जो अच्छा, बोल वो रहे एक थे. क्वेश्चन करेक्ट करना था. नहीं सर, वो नहीं बोल रहा, दूसरा कह रहा. सर आपको ना, भेजता हूँ. ठीक है, एक बार क्लैरिफाई तो करो ना, क्या है वो. So you had given us a question: E is equal to mod of root of a raised to 4 plus 5a square plus 4 minus something. And we had to find E max. So for that we had to use the logic P must divide AB externally. But then the problem was AB never intersected the parabola. Yeah, and then I said that find out an appropriate point A and B and make a new question, right? Yes, sir. Yeah. Please send someone if you have made a question. That's right. I've understood now. So guys, like, we took that question from maxima minima. Generally, when such questions are being asked, people used to use maxima and minima, and there they stuck. I mean, that is the part where a student feel that I should differentiate it and I should find out the maximum or minimum value of the function, which is really not possible. I'm trying to make 5 to 6 more questions on maxima minima, which are clearly related with the shortest distance, right? You should try at home, not immediately. When we'll meet next time, I can either dictate or I can send you the picture on WhatsApp group. But yes, we didn't start the topic right from beginning, that tangent and normal. So we will not leave anything like, on behalf of that coordinate geometry, you guys have done well, something like that. We'll do everything right from zero, and it will take 2 lectures, today's lecture and the next lecture. Probably we'll be able to finish with the tangent normal, and then you will get homework. No homework today, but in next lecture you will get the entire homework of tangent and normal, right? So the first part, Vansh, what is it? What I have writing? I'm writing here y minus y1 equal to m times x minus x1. So it's a slope point form of the Point slope form. Okay. What exactly, how do you Pushpam? Yes, sir. A point slope form में, like, if this is the curve and previously we were talking about the line, now we are talking about the tangent at this point P. This point is x1 y1. Then what is m here? What is m here? Sir, m is the slope tan theta dy by dx at that point. Dy by dx at x1 y1. y1. That's right. Okay. What about this? Y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 times x minus x1. So this is 2-point form. 2-point form. Line joining 2 points. Joining 2 points. Okay, that's fine. Guys, it's very silly to write, but we must. X square plus y square equal to a square. How do you find tangent at x y1 y1? Tangent
at x1, y1. Directly you put it P like is this: equal to x zero. x1 y y1 equal to a square. You write it like this, right? Yes, sir. Actually, if I change this entire part, like, you know, x cube plus y cube is equal to a. Then what is tangent at x1, y1? We can write it, it's a linear form. So No, you can factorize. Can you factorize x cube plus y cube and no, then? no. Gopal, we are not going to do that. X into x1 square. See, we are finding a line. So you just separate out the linear factor from this. It seems magic, but it is true. Y into y1 raised to power 2 is equal to a square. This is the equation of tangent to this curve at x1, y1. If this curve is this and x1, y1 is this point, then this line is given by this equation. Forget about this, guys. I can generalize it. X to the power n plus y to the power n is equal to k, where n belongs to the set of rational number. Equation of tangent at x1, y1. First of all, you must understand this word. This implies x1, y1 is on the curve. So, Please go ahead. so that in the when you're giving the when you did t equal to 0 for x cube plus y cube equal to a, in the second line it should be a and not a square, right? Right. So, like, guys, x raised to power n plus y raised to power n is equal to k. Is equal to k. This is the curve and x and y1 lies on this. Guys, remember one thing. Whenever it is given that the point is lying on the curve, in calculus, in mathematics, the point is lying on the curve, then your first step in every question, that this point is satisfying this given curve, x1 raised to power n plus y1 raised to power n is equal to k. This I have written out of the context. Whatever question he is asking, it's a question of tangent, normal, maximum, minima, anything it is related with. I'm saying if a point is lying on the curve, you should always write this first equation and keep it aside. I mean, just remember that sometimes if it is needed, I will utilize this, right? In 90% cases, we utilize this, but in 10% cases, it's useless also. Okay, but we should not forget this. If a point is lying on the curve, just substitute and write an equation. Okay, now to find the equation to this curve at x1, y1, you need slope. To find the slope, you need to differentiate this. What is the derivative? N x to the power n minus 1 plus n y to the power n minus 1 dy by dx is equal to 0. So what do you get? Dy by dx is equal to minus x raised to power n minus 1 upon y raised to power n minus 1. Actually, I want dy by dx at x1, y1. I should not forget that also. So put it here, x1 and y1. This is my slope. Oh, sir, I have a doubt. Sir, you have written where n is part of what? I'm not able to read that. N is belonging to the set of rational number. Okay. Right. So like dy by dx
we have got. Now to find the equation of tangent, we need this equation of tangent. Equation of tangent is equation is y minus y1 equal to m means minus x1 raised to power n upon n minus 1 upon y1 raised to power n minus 1 times x minus x1. This is the equation. Cross multiplication. Multiplying this by this, we get y1 raised to power n minus 1. Guys, look at this. Minus y1 raised to power n is equal to minus x1 raised to power n minus 1. Multiplying this plus x1 raised to power x1 raised to power n. Just look at this. Look at this. I think we have got the answer. Yes. Yes, sir. Yes. X1 raised to power n minus 1 plus y1 raised to power n minus 1 equal to x1 raised to power n plus y1 raised to power n. And this we know. This is K. Equation of tangent. This is what I have written here. Look at this. Look at this. Where's this? This is the curve. And tangent at x1, y1. That means linear factor split out. X to the power 1 split out. X1 raised to power n minus 1. Generalized form. So this is correct. This is correct. We can write it. Right. Is there any condition on n? See, n can be rational or n can irrational में तो differentiate करने में दिक्कत आती है, right? But n can be rational. Rational रहेगा तो कुछ भी होएगा ना. ये हमेशा vary करेगा ना. मतलब हमेशा agree करेगा ना formula. Any issues, guys? No issues, sir. Right. So in general, like, we can utilize this formula for every question now onwards. Okay. So आप वापस बता सकते हो irrational होने में क्या दिक्कत है n का? x raised to power √2 का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना गोपाल एक बार. ओ अच्छा ठीक है सर. ठीक है ना, पता लगेगा. ओके. हाँ guys, so look at this. I mean, I'm talking about this point, third point. So I'll continue with the third point, third A. Before writing third A, can anyone tell me x equal to 80 square and y equal to 280? It's a parametric equation of parabola. Equation of parabola, and I'm finding equation of tangent to this parabola. Parabola at t. Guys, when we write at t, means x1 is 80 square, and y1 is 280. So the equation becomes this is fourth point, parametric equation. Equation becomes y minus 280 is equal to dy by dx. Dy by dx is nothing but dy by dt upon dx by dt. That is 2a upon 280, right? Times x minus 80 square. That you can solve. I mean, with parametric equation, you can solve the equation easily. It's very easy. It's very elementary, actually. Somebody is given parametric equation and he's asking an equation of, tangent. So you just apply the formula on t. He's asking find for t is equal to 3. Then guys, put t is equal to 3 at every place. That's it.
put t is equal to 3. So you'll get y minus 6a is equal to 1 upon t means 1 upon 3 times x minus 8e square 9a. That's it. You don't need to worry much about it actually. But guys, as far as this formula is concerned, I would like to go ahead with this. I will take 3a here. He's asking, prove that sum of intercepts on axis by the tangent at any point on the curve under root x plus under root y is equal to under root a. Guys, look at this. It is giving you some information actually. It's giving an information like this. First of all, according to this curve, it should be in the first quadrant only. Just a moment. हाँ, guys ये OA and OB की बात कर रहा है ना गोपाल? Yes, sir. मतलब वो क्या बोल रहा है कि OA plus OB will be fixed. ये पॉइंट जो है ना x1 y1 ये Yes. कुछ भी हो चलेगा. Sum point of पूरे- the intercepts is पूरे कर्व पे कुछ भी पॉइंट ले लो, OA plus OB will always be fixed. This is what he is asking. Am I right? किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चन में डाउट है क्या? बराबर है? Yes, sir. Okay. Now look at the solution. First of all, we have to find out the equation to find A and B, right? So equation of tangent. Equation of tangent. No. Do you know what we have forgotten? Just guess. So parametric point. No, not at all. Rectifying the curve. No. Guess what we are domain. forgetting? Or X1, Y1 lies on the curve. We are forgetting that under root X1, ये solution का एक part हम लोग लिख देते हैं इसको. So, but It'll help. so the question is thoda incomplete. I have to write something like prove that the sum is, or if you're not given like is constant or No. Prove that sum of intercepts on axis by the tangent at any point on the curve is always constant. This is what he's asking. You're right, Vivan. So guys, first of all, under root x1 plus under root y1 is equal to root a. बताओ ये तो लिखना ही चाहिए ना? Yes, sir. Right? Now, equation of tangent. Can anyone tell me? Equation of tangent at x1, y1. What will be that? So x upon under root x1 X plus by y under root upon x1 x plus y upon under root y1 is equal to root a. y1 is equal to root a. is equal to root a. What is OA, Vivan? What is OA? X by a, y by b equal root to 1. x1. So OA is root x1 into root a. Root x1 into root a. OB, And OB will be root y1 into root a. I think we have got the answer. So then sum will always be Root a is constant, is out. yes. I mean common, and we get under root x1 plus under root y1, which is nothing but under root a. So answer comes out to be what? Constant. It is not depending on x1 y1. x1 y1 कुछ भी लो, पूरे कर्व पे कहीं भी चले जाओ, x1 y1 कुछ भी रहेगा. It makes no difference, right?
it is always comes out to be, it is depending on this value actually. It is constant, this constant. जो constant यहाँ आएगा उसका square इधर आ जाएगा. That's it. That's it. Have you got it, guys? Is there anyone having doubt? It's an Yes, sir. application. It's an application of this result actually. If you guys can understand this. Yes, sir. Right. Now I have a question to all of you. Guys, यहाँ पे मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि t का वैल्यू y अपॉन 2a यहाँ रखता और इस कर्व को y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 4x बना सकता था ना. जैसा ये कर्व दिया हुआ है वैसा ये कर्व भी हो सकता था ना. क्या बोलते हो? तो ये वाला इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा ना फिर? हाँ, अलग फंक्शन हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, किसी इक्वेशन का पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना पॉइंट नंबर 1 और पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका कर्व निकालना पॉइंट नंबर 2. वाइस वर्सा बहुत बार पॉसिबल है, कुछ बार पॉसिबल नहीं है. सर डोमेन में दिक्कत आएगा क्या? हाँ, प्रॉब्लम आ जाएगा ना. मतलब मानो कि यहाँ से t का वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, तो वो तो इजी है, लेकिन मानो यहाँ इक्वेशन ही ऐसा लिखा हुआ है कि t इन टर्म्स ऑफ y निकालना पॉसिबल ही नहीं हो, या यहाँ से t इन टर्म्स ऑफ x निकालना यहाँ पॉसिबल ही नहीं हो, तो फिर x और y में रिलेशन नहीं निकाल सकते ना. बराबर ना? यस सर. कंक्लूजन क्या है, मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो एक चीज कि अगर ये पॉसिबल हो कि यहाँ पे x और y में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, राइट, तब टेंजेंट का इक्वेशन इस फॉर्मेट में निकालना, मतलब फॉर्मेट नंबर 1 में निकालना, इट्स नॉट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ x1 y1, राइट, प्रोवाइडेड पॉइंट पता लग जाए. एक्चुअली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, कम समझ में आ रहा होगा अभी. थर्ड बी ये क्वेश्चन मैंने लिया, उसने क्वेश्चन पूछा, तो बोलता है कि फॉर x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, प्रूव दैट sum of squares of intercept on axis is always constant. What is the difference in question number 3A and 3B? It's same, no? Sir, in this question, no direct relationship is given between x and y. Yes. In this question, though, there's no direct relationship given in x and y. So there is no issue, like, you know, basically ये sum of squares of curve तो ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसा ही कुछ curve होगा, कैसा भी हो, उससे क्या मतलब है, right? क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, ये a हो गया और ये b हो गया, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर को कांस्टेंट बोल रहा है, वो यही बोल रहा है ना भाई. कर्व कैसा बनेगा हम लोग को तो कोई नॉलेज नहीं है, कैसा कर्व बनेगा, एंड वी आर नॉट इवन बॉदर कैसा कर्व बनेगा. तो हम लोग तो क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, थीटा के टर्म्स में आएगा नहीं आएगा गाइस? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थीटा के टर्म्स में आएगा कि नहीं आएगा? No, so it won't come if you sort of Eliminate theta. yeah, so you have to eliminate theta. So if you put so should I say the answer or No, wait. Dishant, can you hear me? Yes, sir. अभी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो y माइनस a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, है ना? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, दिस विल बी द इक्वेशन. y माइनस a साइन क्यूब थीटा, this is solution, is equal to dy by d theta upon dx by d theta, that is 3a sin square theta into cos theta divided by what?
minus 3a cos square theta into sin theta times x minus a sin cube theta. ये आएगा ना इक्वेशन. Yes, sir. What do you say, Dishant? Yes, sir. Okay. Now, what do you want exactly? What do you want? You want OA square. For that, you need to put y is equal to 0. x minus a cos cube theta होगा. X minus a sin cube theta होगा ना यार. Oh, we have written it opposite. Yes, sir. Cos cube theta. So, Huh. okay, I know. Okay, so I'll just I solved No, it. Vivan, wait. I know what you want to speak. Just wait for a minute. Huh? So guys, ये theta के terms में आएगा. Now to find what OA, what to do? Can anyone tell me what to do to find OA? Put y is equal to 0. Y is equal to 0. कितना गंदा x आएगा? कुछ तो आ ही जाएगा, right? Tangent normal में ऐसे गंदे गंदे x आएंगे, ये मान के चलो. Okay, तो x आ गया. To find OB, y equal to 0. Y equal to 0. X आ जाएगा. To find OA, put x is equal to no. To find OA, put x equal to 0. Put y equal to 0. To find OB, put x equal to 0. आ जाएगा ना guys? What do you say? Yes. But don't you think it's all useless? We are doing like to find OA and OB. Too lengthy. ना, but एग्जाम में अगर क्लिक नहीं करेगा तो करना ही यही पड़ेगा और कोई इशू ही नहीं है, यही करना पड़ेगा. Isn't it, guys? यही करना पड़ेगा. मुझे एक चीज बताओ. Now solve for OA and OB. OA square plus OB square क्या चाहिए बताओ? Independent of theta चाहिए ना. Yes, sir. भाई थीटा कुछ भी हो, it will be constant. This is what you want, right? ये exact idea है ना इसके पीछे, guys. Yes, है ना? लेकिन guys, tell me one thing. Can we make a relation over here? Cos square theta plus sin square theta is 1. We know that. बराबर ना? और cos square theta plus sin square theta equal to 1. Can I write it? X raised to power 2 by 3. Yes, sir. Plus y raised to power 2 by 3 Is equal to a raised to power 2 by 3. equal to a raised to power 2 by 3. This curve is nothing but this curve, right? This is your curve and this is your tangent. You want OA square plus OB square. OA square plus OB square, right? We can find the equation of tangent here. Then let this point be x1, y1. Same process as the previous question. Same process as the previous question. Do you remember that question? Yes, sir. You remember this question? The first step. Don't forget the first step. Don't forget the first step. What do you get here? X1 raised to power 2 by 3 plus y1 raised to power 2 by 3 equal to a raised to power 2 by 3. Now equation of tangent. Equation of tangent. So, What is equation of tangent? Guys, tell me. x by cube X by x1 raised to power 1 by 3 1 by 3. plus. Ivan, you wanted to say the Plus. same? Yes, so same thing. Yeah, good. Y upon Y is power 1 by 3. y1 raised to power 1 by 3 equal to a raised to power 2 by 3. Yes. Gopal, what is OA? OA square बोल दो, चलो OA बोल दो. So OA की OA square. अबे यार मतलब x इंटरसेप्ट बोल दे यार. सर y को 0 डाल दो सर, तो x गधेड़ा, ये x by a by y plus y by b equal to 1 दिख नहीं रहा तुझे? तो वही तो बोल रहा हूँ सर. तो x1 to the power 1 by 3 into a to the power 2 by 3. x1 raised to power 1 by 3 a to the power 2 by 3 and OB, Gopal, OB. So x को y1 to the power 1 by 3 into a to the power 2 by 3. हाँ. Guys, you must have understood OA square plus OB square is constant here. Yes, sir. X1 raised to power 2 by 3 plus y1 raised to power 2 by 3 and what is out? 4 by 3. A raised to power 4 by 3 is out.
What is it? Here, look at this. So a square. A raised to power 2 by 3 into a raised to power 4 by 3. अब वापस यही आ गया। A square ही आ गया। Square. एक्चुअली गाइज इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ना एक ट्रेंड बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? ये आपको ये इक्वेशन हेल्प करता है, इसको नहीं भूल जाना चाहिए। अदरवाइज ऐसे मत सोच लो कि सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे आने वाले हैं, इसी फॉर्मेट पे आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, कोई कर्व दिया हुआ है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, राइट? एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0, y इंटरसेप्ट के लिए x0 निकाल के अलग अलग देखना पड़ेगा। फिर कुछ मैनिपुलेशन इधर करनी पड़ेगी टू फाइंड आउट द कांस्टेंट। जैसे यहाँ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी वैसे यहाँ भी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट you have to do. Is it clear to everyone, guys? Yes. All right, going for the next, guys. In fact, I'll ask some specific student. किसको पूछना है भाई? आर्यमन को? आर्यमन? Yes, sir. Aryaman, when I say point number 4, a line is equally inclined to axis. What do you mean about this? So मतलब वो 45 degrees है। नहीं, Equally m का वैल्यू बोलो ना, m क्या होगा? M को 1 second sir, और M तो 1 होगा और -1। m equal to 1 or -1, 1 or -1. Okay, I'll ask a simultaneous question here. L is equally inclined to L1 and L2. How do you mean this? Figure out कैसे करते हो? ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। So we find out the No, like मतलब इसका मीनिंग क्या है? L is equally inclined to L1 L2 का मीनिंग क्या है? It's the angle bisector. sir, No, अरे वो बोल रहा है ना वंश, I'm not Oh, asking you, okay, Ayman को sorry. पूछा है ना। Sorry. so we see the angle between L1 and L2 and it bisects the line L1 and L2. It forms like an equal angle between them. मतलब L means you are talking about this line, isn't Yes it? sir, उसके बीच में एक line बना देंगे। The angle between L and L1 and L and L2 will be the same. All right. Don't you think this line is also possible? Yes sir, that's also correct. अच्छा. Don't you think this line is also possible? This line is also possible. This line is also possible. This line is also possible. Yes, so I think it can. No, don't you don't think, you must be sure of it. Family of lines parallel to angle bisector. यार बहुत दिनों बाद लिया है यार, bisector. Family of lines parallel to angle bisectors, right? Two family of lines. Whenever this question is being asked, there are always two family of lines parallel to angle bisector between L1 and L2. इसका मतलब ये है। तो जब एक्सेस की बात करेंगे, तो एक तो ये वाली सारी लाइंस आएंगी, ये वाली सारी लाइंस, ये इन सारी लाइंस का m जो होगा वो 1 होगा, राइट? और एक ये वाली सारी लाइंस आएंगी, इन सब का m क्या होगा? -1, बराबर? तो m1 एंड -1 दोनों कंसिडर करेंगे। दिस इज 4th A। गिव मी अ मिनट। मैंने तुम लोग को बोला है, मैं क्वेश्चन मार्क भी नहीं करने जा रहा हूँ कि ये तुम्हें आता है कि नहीं आता है। जो चीज मुझे लगता है सिखाना जरूरी है वो मैं इधर बताने वाला हूँ। 4th A। 4th B। Vivan, question goes to you. Vivan, can you hear me? Vivan? Yes, sir. A line
makes equal intercept with axis. What about M? Again, so M should be +1 or -1. +1 or -1. Remember, when we talk about intercept, So M can't be 0, I'm guessing. no. When we talk about intercept means signed distance we are talking about. Means we are talking about this OA and OB, and we are talking about this OA and OB, equal intercept. Oh, acha, that's only -1, no? Yes. Equal intercept means signed distance. Intercept जो बोलेगा ना तो signed distance means M equal to -1 is the only correct answer. M equal to 1 is not the correct answer. You should remember this. Is it okay to everyone, guys? Yes, sir. Okay. So line making equal intercept with coordinate axis, use M equal to 1 in any case. Okay. Fourth B. Next point number 5. Guys, just give me a minute. Sorry. Guys, point number 5. Can anyone tell me, guys, ये फिफ्थ वाला जो पॉइंट है ना, इसको पॉइंट नंबर 5 नहीं, एक एग्जांपल की तरह लेते हैं. कुछ सीखना है इधर में. ये सब लोग को आता है. ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ना, ये सारे लोग को सॉल्व होएगा. ओके, कुछ लर्निंग है इधर में, कुछ सीखना है एक्चुअली. ये कर्व मैंने बनाया, यहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया. इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं 2,8. this point A, point B. Tangent to y is equal to x cube at 2,8 meets the curve again at B. Find AB is the question. So guys, Anushri, can you tell me what to do? Anushri, can you hear me? So can you please repeat? I could not hear you. Anushri, I'm saying this is a question. This is the curve y is equal to x cube. Drawing tangent at point A, meeting the curve again at point B. You have to find out distance AB. How to get? So you can calculate the tangent at point 2,8 and then intersect. How to find tangent at 2,8? So it will be y minus y1 into m into equal to m into x minus x1, isn't it? yes, sir. By x1 y1 is 2,8. Okay, x1 y1 is 2,8, and dy by dx you can find easily from this place at 2,8. Aryan, what do you say? Yes, sir.
All right. So in that case, wait. Why can't we replace y with y plus y1 by 2 and x cube with x1 square? अरे यार रुको ना यार, तुम प्लीज बीच में मत बोलो ना, एक बार पूरा कर देने दो क्वेश्चन, फिर जब तुम्हें कुछ नया नजर आए, विवान ने जैसे बोला था उसके बाद। अभी अपन क्या हो, लाइव क्लास में नहीं है ना, तो थोड़ा सा स्टॉप करो। एक बार जो अनुश्री ने बोला उसको कंप्लीट तो होने दो एक बार। हाँ आर्यन, Yes, do you sir. understand? Do you understand what she said? Yeah. 2,8 पे टेंजेंट निकाल दिया उसने। Yes, sir. That is y minus 8 equal to m. What is m? How to find m? dy by dx at 2,8 Yes, sir. times x minus x1. Yes, है ना? sir. टेंजेंट निकल गया, टेंजेंट निकल गया। गोपाल, टेंजेंट निकलने के बाद क्या करेगी है? अनुश्री क्या करना चाह रही होगी? So write the 1 point form with the slope and then intersect it with the curve again. हाँ मतलब एक लाइन का इक्वेशन पता लग गया और कर्व पता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेगी ना। Yes, sir. क्यों धर्मेंद्र, व्हाट डू यू से? जहान, व्हाट्स योर आइडिया? हाँ सर, ऐसा ही करें। ऐसा ही करना चाह रही है ना वो? हाँ हाँ बराबर ना? हाँ। दैट्स नॉट रॉन्ग ऑल्सो, मतलब वो यही करना चाह रही है। y minus 8 equal to dy by dx 3x square times x minus x1. That's it, right? Tangent Yes. at a, tangent at a, right? Now solve this with y is equal to x cube. We get point B, right? अनुश्री, ये बोल रही है अनुश्री तुम? Yes, sir. पता है इसमें ये कुछ और ही बोलने की कोशिश कर रहा है। वंश कुछ अच्छा मेथड देने की कोशिश कर रहा है कि सर इतना झंझट मत करो, कुछ इस तरह का कर लो, ये कुछ इस तरह का जान दो। वंश तू क्या बोल रहा है, जरा बोल। I was thinking of parametric maybe. पता है वंश क्या बोल रहा है? वंश ऐसे बोल रहा है, वंश मुझे कंप्लीट करने दे, वेरीफाई करना तू जो बोल रहा है वही है क्या। ये 2,8 लिया, अब ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं x1, x1 क्यूब, इजंट इट गाइस? कैन आई टेक दिस पॉइंट x1, x1 क्यूब? Yes, sir. Now, what is the slope of the line joining these 2 points, 2,8 and x1, x1 cube? What's the slope? Well, x1 cube minus 8 upon x1 minus 2. x1 minus 2. And what is the actually slope of this line? Slope of this line? dy by dx. 3 Great. into 2 square. This I have written here. Well, yes. 2 square. Now this x1 minus 2 factor is over. x1 minus 2 factor is over, isn't it, guys? Yes, sir. What is left? x1 square plus 2x1 plus 4 is equal to 12. Factors x1 minus 2 and x1 plus 4 equal to 0. I'll get x1 is equal to minus 4. Why I have rejected this? x1 is equal to 2. So that's the same point that you're. That's the same point actually. x1 is equal to minus 4, then y1 is second point. Second point will be minus 64. So this point is, what will be this point? This point is minus 4 comma minus 64. I am not interested in finding this distance ABR. तुम भी मत find करना, ठीक है ना? बस B point मिल गया ना, बहुत है। AB तो कोई निकाल ही लेगा। आपने अभी घर में निकाल के क्या बड़ा काम कर लोगे, बराबर ना? गाइस इसमें फिर तुम लोग बोलोगे सीखना क्या है? पहली बात तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना सीख लिया कि कोऑर्डिनेट के अलावा भी कोई कर्व है जिस पे टेंजेंट कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन ये शायद इस तरह का, ये वरना तो कुछ फॉर्मेट चल रहा था एक्चुअली, राइट? वो सीख लिया।
दूसरा चलो एक पॉइंट कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट गाइज आई वांट टू टीच यू समथिंग एक्स्ट्रा हियर. जस्ट लुक एट दिस. Guys, look at this equation, which I've already written actually. x1 minus 8 upon x1 minus 2 is equal to 12. ये इक्वेशन है ना, यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन ही है ना गाइस. तुम लोग हो साथ में, नहीं हो इसलिए बोल रहा हूँ. कैमरा ऑन रहता ना, अभी लाइव पढ़ाई होती थी, फायदा ही होता था. किसी को भी आप टच कर सकते हो, किसी को भी पता रहता है ना, सारे बैचेस कैमरा ऑन करके पढ़ते हैं ना, पता रहता है आपका आउटपुट अच्छा आता है. अभी फिर एग्जिट करना शुरू करूंगा तो सबके कैमराज अपने आप ऑन हो जाएंगे. तन्मय, व्हाट डू यू से? यस सर. ये पॉइंट समझ में आया? ये वाला पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला तो लिखा हुआ है पहले. हाँ, उधर x1 का क्यूब होना चाहिए. x1 क्यूब होना चाहिए, ये नहीं लिखा. वेरी गुड, गुड कैच. सो लाइक पुष्पम, तेरा कैमरा ऑफ क्यों है बेटा? अभी ऑन हुआ. पुष्पम, इसमें गैस कर, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? कैंसिल तो करना सिखा नहीं रहा, वो तो ऑलरेडी पीछे हो चुका है और वो तो टीच करने का जरूरत भी नहीं है. तो पुष्पम, क्या एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? गाइस पता है, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अच्छा ध्यान दो सब लोग, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं फिर इधर लेके आऊं, तो इसके फैक्टर्स ऐसे बनते हैं. x1 माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू x1 प्लस 4 इक्वल टू 0. गाइस पता है ये ग्राफ ऐसा बना था, याद करो. जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी ना, जिस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे बनती है बताओ? ये वाला कर्व है, a कॉमा b पॉइंट पे ये सीकेंट है और c पॉइंट पर टेंजेंट है. अगर ये वाला पॉइंट अल्फा है, अल्फा कॉमा बीटा है, और ये वाला पॉइंट कुछ x1 कॉमा x2 है, तो गाइज ये वाला पॉइंट जो होगा ना, ये वाला पॉइंट. अच्छा, टेंजेंट का डेफिनेशन क्या देते थे? स्लोप का डेफिनेशन क्या देते थे गाइज बताओ? स्लोप का डेफिनेशन f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h. ऐसा ही कुछ करते थे ना? यस. किसके बीच में डिस्टेंस होता था? x प्लस h और x के बीच में डिस्टेंस कोऑर्डिनेट होता था, राइट? तो जब ये सीकेंट टेंजेंट बनेगी तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट होगा बच्चों. सी पॉइंट पे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट होगा? बीटा वाला परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट होगा कि अल्फा वाला क्रिएट होगा? अल्फा वाला क्रिएट होगा. एक्स कोऑर्डिनेट वाला परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट होगा. व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट 2,8 है, ये पॉइंट तुमने अल्फा कोमा बीटा लिया है, राइट? तो ये वाली लाइन जब टेंजेंट बनेगी 2 पे जाके ये वाली लाइन अगर टेंजेंट बन रही है 2 पे, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर आना ही आना है बच्चों. डिपेंड करता है, ये होल स्क्वायर आएगा, होल क्यूब आएगा, होल 4 आएगा, दैट डिपेंड्स, राइट? मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इस सारे प्रोसेस को एक बार एलिमिनेट करूं तो मैं कुछ तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सब लोग ध्यान दो. ये किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगा मैं गारंटी नहीं करता, लेकिन अगर काम आया तो मस्त काम आएगा और तुम लोग इसको अच्छा कर पाओगे. बहुत कम लोग ठीक कर पाएंगे. जरा ध्यान दो इस पे गाइस. ये कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और उस पर टेंजेंट बनी y, ये वाली टेंजेंट. ये टेंजेंट का नाम क्या है? y इक्वल टू 0. बराबर ना? अब बताओ, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो x माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा ना? यस Yes. यानी कितने रूट्स रिपीट हो रहे हैं? 0,0 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है ना? Yes. यानी टेंजेंट जब भी बनेगा ट्वाइस रिपीटेशन होगा.
Can we say कि even repetition होगा tangent जब भी बनती है? Yes, sir. जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनता है वहां इवन रिपीटेशन होता है. कैन वी से दिस? नो, नो, वी कांट से. लुक एट दिस कर्व वंस अगेन. लुक एट दिस कर्व. y is equal to x cube and this point is 0, 0. This line is y is equal to 0. टेंजेंट है कि नहीं है? ये टेंजेंट है ना? किया है ना ये क्लास में बच्चों? अब बताओ रिपीटेड रूट्स y इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करो, टेंजेंट को और कर्व को सॉल्व करो, तो इसका सॉल्यूशन क्या देगा? x माइनस 0 होल क्यूब इज इक्वल टू 0. 3 रिपीटेड रूट्स. 3 रिपीटेड रूट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So at least 2 times. No, here it is 3 times. 0 3 times. So Here it is. At least 2 times repeat होना चाहिए. हाँ, at least 2 times repeat. That's true. At least 2 times repeat. अब अगर मैं इसको 4 बना दूं बच्चों, इसको 4 बना दूं तो ये x माइनस 0 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा ना, और इसको 5 बना दूं तो ये x माइनस 0 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा ना. ये तो इन कर्व्स की बात कर रहे हैं बच्चों. ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व आएंगे तो रिपीटेशन का नंबर फिक्स थोड़ी होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर. बच्चों जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनती है वहां रिपीटेड रूट्स मिलते हैं, सिर्फ इतना सा मेरा कहना है. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही बोलते हो ना कोऑर्डिनेट में इसको तुम लोग? Yes. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रूट्स आर रिपीटेड. रूट्स आर रिपीटेड. बस ये ध्यान रखने वाली बात है. ये इतना सा पार्ट मुझे सिखाना था इस जगह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके. इसको किस क्वेश्चन में कहाँ लेंगे बच्चों? बुकलेट में शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा शीट में एक आध दो क्वेश्चन इस तरह के जब आएंगे ना और नेगेटिव आएंगे तो ये याद आ जाएगा पॉइंट. सर ने बताया था रिपीटेड रूट मिलेगा, इसका ध्यान देना था हम लोग को. राइट, ये की पॉइंट है. मतलब इस क्वेश्चन में तो दम है ही नहीं एक्चुअली. पॉइंट बी निकालना इज नॉट अ ग्रेट क्वेश्चन. राइट, दम किस क्वेश्चन में है कि जहां टेंजेंट बनती है वहां रिपीटेड रूट बनता है. वो ध्यान रखने वाली चीज है. कभी जरूरत पड़ेगी तो यूटिलाइज करेंगे. ऐसा कोई क्वेश्चन भी अभी फिलहाल हम लोग नहीं लेने जा रहे हैं. आर यू क्लियर? So, हाँ, question. So आर्यन when you पटेल say, बोल. so when you say repeated roots basically you mean the same point is repeated twice. Basically there are 3 possible roots because x cubed. So when one point is repeated twice, you mean? Yes, 0 is repeated thrice here. So the roots of the point of intersection of the tangent on the curve. Yes, that is repeated actually. Got it? What's the point of finding that out? Gopal, is it clear? Yes, sir. All right. My question was, what's the point of finding out that the roots are repeated? Like, what do we do with that? There's no point. When question will come and you will stuck and you will commit mistake, then only point will raised. That I taught you that the points will be repeated. Like some polynomial I am giving you, a 5th degree polynomial where you are drawing a tangent at some particular point, say alpha. Then in that polynomial you can write x minus c. You have x to the power 5 blah blah blah, some polynomial, and you are, this is the graph, you are drawing tangent at alpha. Then it's a chance that you can have x minus alpha whole square whole 4. Can you x minus alpha whole 4? Can you have x minus alpha whole 6 in the factors of this? No. No, that's what I'm saying. Whenever he's saying drawing tangent at x equal to alpha, that implies that while solving the equation of tangent with this polynomial, you will definitely find x minus alpha whole square is the minimum factor. You can get x minus alpha 4 also. Are you getting my point, Aryan? Okay, yes. Yeah, I'm kind of getting that. Yeah, I'm getting it. Pushpam, is it clear? Yes, sir. So minimum will minus alpha what is this? Gopal, Yes, sir. anyone else having any doubt over here? It's not difficult point, but it's important. It's not useful, I mean, in many questions, but if it is used in one question out of 100, then less number of students will crack this problem, and I can guarantee it.
आई विल प्रूव इट बाय द टाइम. इमीडिएटली लूंगा तो कर दोगे ना क्वेश्चन, अभी मतलब नहीं है. कैन आई गो अहेड गाइस? Yes, Okay. sir. Okay. So guys, after fourth B, I'm moving towards point number 5. Point number 5. Guys, look at this. This is curve C1. This is C2. I'm giving you a very common statement for these two curves when they touch each other at x1, y1. When two curves touch at a point, three conditions are always same. Condition number 1, x1, y1. ऐसा लग रहा बड़ा एलिमेंट्री सा है ना, है भी एलिमेंट्री. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी एलिमेंट्री लगेगा, लेकिन करना सोच समझ के. x1, y1. Second, x1, y1 lies on C2. थर्ड कंडीशन नंबर 3 क्या होगी बच्चों? कंडीशन नंबर 3 कोई बता सकता है? कंडीशन 3 क्या होगी? Lies on the common tangent. Yes, M1 equal to M2 at point of contact. At point of contact. बराबर ना? C1 का स्लोप, C1 को डिफरेंशिएट करो, x1, y1 डाल दो. C2 को डिफरेंशिएट करो, x1, y1 डाल दो. बोलो बच्चों. C1 डिफरेंशिएट x1, y1 डालो. C2 डिफरेंशिएट x1, y1 डालो. क्या बोलते हो? Yes. बराबर Yes. ना? और दोनों को इक्वेट कर दो. हाउ मेनी कंडीशंस? 3 कंडीशंस. बच्चों एक बात बताओ, C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर निकालना हो, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो 2 इक्वेशन सफिशिएंट है ना. तीसरी इक्वेशन की क्या जरूरत है? So because the third one gives a linear relation. अरे बाबा, x1, y1 No. x1, y1 C1 पे भी लाई कर रहा है, x1, y1 C2 पे भी लाई कर रहा है. वो तो ऐसा कंडीशन भी हो सकता है ना. सर वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते मतलब. नहीं समझ रहा. x1, y1 C1 पे लाई कर रहा है, C2 पे भी लाई कर रहा है, तो इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं ना कर्व. x1, y1 टच कर रहे हैं एक दूसरे को, इसके लिए 3 कंडीशंस की जरूरत पड़ रही है. लेकिन x1, y1 तो मैं C1 पे लाई कर रहा है, C2 पे लाई कर रहा है, ऐसे लिखूंगा तो 2 इक्वेशन मिल जाएंगी. 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, x1, y1 2 वेरिएबल निकालने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत नहीं है ना बच्चों. तो तीसरी इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है पता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन करो, उससे पता लगेगा. So maybe make our life easier because there's a better relation. Like we can just directly add that relation to one of those equations. भाई सोशियोलॉजी क्लास मत So- चला इधर. हाँ, प्रैक्टिकली बात कर. मे बी का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट बोलना. मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स है जहाँ टच हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, और उनमें से डिफरेंशिएट करने के लिए कि किसमें नहीं टच हो रहा बेटा, है, किसमें नहीं. मल्टीपल पॉइंट्स की बात नहीं, एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे. आई एम आस्किंग, ये पॉइंट जो यहाँ दिया हुआ है, इसके लिए मुझे क्या जरूरत है कि मैं 3 रिलेशन लिखूं? 2 रिलेशन सफिशिएंट है ना. अगर मैं इसको हाइड कर लूं, सोच इसको मैंने हाइड किया. Makes sense. So can I say why you need the third one? अरे बाबा, टेंजेंट भी कॉमन होनी चाहिए ना दोनों जगह में. हाँ sir, otherwise can be an intersecting point of them. हाँ भाई, इन दोनों कंडीशन से तो कर्व इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं ना, तो टेंजेंट का स्लोप भी कॉमन आना चाहिए ना. ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली कुछ बताती हैं बच्चों. क्वेश्चन के थ्रू इसको क्लियर करते हैं. सब लोग ध्यान दो. In fact, I must write 5th A. एकदम आराम से सीखो चीजें, ऐसे भाग के मत सीखो. देखो 5th क्वेश्चन क्या पूछा है. If y is equal to e to the power x and y is equal to kx square touch each other,
फाइंड के। देखो अब 3 रिलेशन की जरूरत पड़ेगी ना। x1 y1 इस पे लाई कर रहा है इक्वेशन 1, बराबर ना गाइस? Yes, sir. x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके तो x1 y1 निकल जाएगा। अरे उसको k निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन की भी जरूरत पड़नी चाहिए ना, यस सर। बराबर ना? इसका स्लोप x1 y1 पे, इसका स्लोप x1 y1 पे सेम कर दो। ये कंडीशन यूटिलाइज करो बच्चों, ये कंडीशन यूटिलाइज करो तीनों, और k निकालो। राइट, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, फिफ्थ बी। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब एंड y is equal to 4 root x. Sorry. Have 1 point common. Find a. बच्चों करो 5 to 10 minutes. सब लोग अपना अपना आंसर चैट बॉक्स पे डालो, दोनों के लिए। 5A आंसर सामने, 5B आंसर सामने। This is Sir, y दोनों equal to 1 plus x square by a cube and y equal to 4 root x. Have 1 point common. Find a. They touch each other. Find k. दोनों का आंसर 5A सामने आंसर, 5B सामने आंसर। बच्चों करो। सर 5 एंड 5 का एक साथ भेजना है कि वन आफ्टर नहीं, दोनों का एक साथ भेजना है, दोनों का आंसर एक साथ आएगा, उसके बाद ही भेजना है, इसलिए 5 to 10 मिनट्स दिया है मैंने तुम लोग को। ओके। So the y is equal to fourth root of x or 4 root x? 4 root x. Okay, sir.
जिसको प्रॉब्लम्स सॉल्व होएगा ना, हैंड भी रेस कर दो एक बार। राजदीप को हुआ है। राजदीप चैट बॉक्स पर डाल दे एक बार आंसर। सर वो 1 plus x square है by a cube। हाँ, 1 plus x square by a cube। ओह Only 4 students have done it. Take time, take your time, no issues. First वाला क्वेश्चन तो बहुत लोग को बन गया, मुझे पता है। बच्चों इस चैप्टर की बुकलेट सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी पढ़ानी है ना, दैट विल टेक हाफ एन आवर। हाफ एन आवर विदाउट एनी एग्जांपल, ये थ्योरी के सारे पॉइंट्स लिखवा दो तो बुकलेट तो पूरी सॉल्व हो जाएगी। और सेंसलेस है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होगा। आईआईटी में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं तुम लोग से, इसलिए लड़ते हुए करो प्रॉब्लम सॉल्व। 2 लेक्चर लेंगे पूरे इस चैप्टर के लिए। Seven students. I'm waiting for 15 students. Let's see. Eleven students. सर आंसर भेज दे चैट बॉक्स में। हाँ, मैं अभी वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साथ देखता हूँ। ये तीनों कंडीशन काम में लो बच्चों, ये तीनों कंडीशंस।
12 students. It's 15. Guys, what's happening? Out of 36, only 15 students, and we have this much. ये पता है हम लोग को, तीनों कंडीशन यूटिलाइज करनी है, तो निकल जाएगा ना. Sorry sir, I forgot to raise my hand. Sorry sir. ये तीनों कंडीशन अप्लाई करो तो आंसर आना चाहिए. ओनली 17 स्टूडेंट्स. आई एम सरप्राइजिंग. फ्लैगशिप दादर बैच में हम पढ़ा रहे हैं क्या? दादर बैच ही है ना ये, फ्लैगशिप दादर. गोपाल है क्या इस बैच में? यस सर, हो गया. पुष्पम भी इसी बैच का स्टूडेंट है ना? अच्छा, ये दोनों का हाथ तो ऊपर है. क्षितिज है इस बैच में. गोपाल तूने पूछा नहीं है क्षितिज है कि क्या? सर क्षितिज नहीं सर, केशव. अच्छा ठीक है. ऑल राइट. अरे क्या चल रहा है? 22 है अभी, बड़ी मुश्किल से 23 दिख रहा है. नेहल का भी हाथ ऊपर गया भी गया है, अनुश्री ने भी किया है. 26. जिया केयूर क्या कर रहे हो बच्चों? 28. चलो ठीक है, 28 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है तो चेक करते हैं. 29 स्टूडेंट्स. 29 है अभी. आई विल लोअर योर हैंड्स. ओके, 29 hands. Guys, do tell me how many students are getting answer 5th A? Answer. I'm not checking the chat box actually. I'm just writing the answer. K is equal to E square by 4. How many of you are getting the answer? 29 थे, 29 थे, 23 हुए अभी. नहीं, ये तो 29 से ज्यादा होने चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो अब ज्यादा लोग को बना होगा ना. 27. क्या गाइस? आंसर फॉर द फर्स्ट वन E square by 4. 28. मतलब एक को गलत भी है. ये किसको गलत है? सर मुझे. हो गया गलत. अच्छा हो. सर मेरा कैलकुलेशन एरर है, मुझे E square by 2 आ. हाँ तो ठीक है ना, चलेगा ना. 29 बच्चों करके दिखाऊं क्या? किसी को सॉल्यूशन चाहिए क्या इसका? किसी को सॉल्यूशन चाहिए क्या? से यस और नो. ओके, योर विश. सर तो मैं अभी आपका वेट कर रहा हूँ कि आप बोलोगे कि ये गलत है आंसर. गोपाल पता है बहुत नेगेटिव सोचता है कभी कभी. गोपाल, दिस इज करेक्ट एक्चुअली. सर लगा ही था क्योंकि ग्राफ पे सर ऐसे टच कर नहीं रहे थे सर, इसीलिए 5 मिनट तो वही सोच रहा था कि टच करते हैं.
ये करेक्ट है। पता है ये शक जो ना इस तरह से जब पढ़ा रहे होते हैं, शक कर रहे होते हैं, तो यही होता है। चलो ऑनलाइन ही बोल देता हूँ, राइट। ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, बट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, डू यू रिमेम्बर द डे व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैप्टर? व्हाट डिड आई से? ये सबसे गंदा चैप्टर, ये और एक चैप्टर और है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। डू यू रिमेम्बर आई सेड अबाउट दीज टू चैप्टर्स कि सबसे गंदे चैप्टर्स हैं, बराबर ना? Yes. लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ ऐसा, अभी तक प्रूव नहीं हुआ, अब प्रूव होने जा रहा है ये। आज नहीं, नेक्स्ट वीक इट विल बी प्रूवन, राइट। सबको कंफर्म करके दूंगा, गारंटी करके दूंगा, यार सर ये बहुत डर्टी चैप्टर है, ओके। लेकिन अभी फिलहाल गोपाल ये वाला आंसर करेक्ट है। तुझे आया ना गोपाल? तेरा आंसर तो तेरा हाथ तो ऊपर ही है। सर आंसर आया सर, लेकिन लग रहा था कि ये मतलब गलत ही होगा। अच्छा चलो फिफ्थ बी पे चलते हैं। फिफ्थ बी a is equal to 1/3. I'll lower the hands first. Wait. I'll lower the hands first. How many students have got a equal to 1/3? Second question. 5, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19 only. 10 students haven't got it. So silly mistake. So Okay, आर्यन को silly mistake हुआ है। कह रहा तुझे नहीं हुआ क्या? तो a is नेगेटिव भी हो सकता है ना, 1 point in common। Yes, 19 students committed mistake, including Gopal. So to minus infinity to 0 union 1/3. Yes. Guys, the answer is minus infinity to 0 union 1/3. देखो इस बहाने से क्या होगा, हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई लोअर द हैंड्स, सब ध्यान दो बच्चों। ये जो ये वाला कर्व है y -1 और y -1 a क्यूब इधर ले आओ इक्वल टू x², ये है ना बच्चों? ये कर्व कौन सा है, क्या बोलते हैं इस कर्व को? पैराबोला, राइट। ये a पे डिपेंड करेगा ना, a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अपवर्ड डाउनवर्ड पे। Yes. है ना? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, a इंक्रीज होएगा तो LR इंक्रीज होएगा, ऐसा कुछ है ना? लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ Yes. उसी पे डिपेंड करेगा ना? अच्छा इसका वर्टेक्स क्या है बच्चों? वर्टेक्स 0,1। 0,1। तो मतलब ये फिक्स हो गया कि इस पैराबोला का वर्टेक्स 0,1 है। अब मैं पहला केस ले रहा हूं a ग्रेटर देन 0 वाला। ये बच्चों ये कर्व बन रहा है y इज इक्वल टू 4√x। अच्छा मैंने इसको नीचे क्यों नहीं बनाया? So y is 4√x and root x is positive. 4√x, so it has to be positive. 4√x पॉजिटिव है ना हमेशा, तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो y² इक्वल टू 16x तो बनता, तो नीचे भी बनता था, अभी नहीं बनेगा, राइट। थोड़ा ठीक सा बना लेते हैं इसको एक बार, रुको। y इक्वल टू 4√x और बच्चों ये पैराबोला बन गया, ये टच कर रहे हैं। लेट दिस पॉइंट बी x1 y1। y1 इज इक्वल टू 4√x1, y1 is equal to 1 plus x1 square by a cube। एंड बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन क्या आएगी? dy by dx ऑफ दिस कितना आएगा? 2/√x1, ये इसका डेरिवेटिव हो गया 2/√x1 इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव हो गया 2x1 by a cube। थर्ड इक्वेशन, solving 1, 2, 3 a इक्वल टू 1/3। ये आंसर आ गया बच्चों, और तुम लोगों ने ये आंसर लिख दिया, ठीक है। करेक्ट है, रॉन्ग क्या है? सही तो है। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, अब हाँ एक चीज बताओ,
इसमें a ग्रेटर देन 0 पे पैराबोला ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, बराबर। अगर a लेस देन 0 होगा तो वर्टेक्स तो चेंज नहीं होगा, 0,1 वर्टेक्स तो चेंज नहीं होगा। एक तो पैराबोला ये वाला बना, ये तो y इक्वल टू 4 रूट एक्स है ना, और 0,1 ये वर्टेक्स हो गया। a अगर लेस देन 0 लूं बच्चों, अगर a लेस देन 0 लूं, बताओ ये वाला पैराबोला भी बनेगा ना? क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन पढ़ो ना। सर वो टेंजेंट नहीं है ये। अरे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये तो पढ़ ले। 1 point. Only 1 point common, not a tangent. ये 1 पॉइंट कॉमन है ना, प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ लो। ये दोनों क्वेश्चन सेम देने का मतलब क्या है? एक डिफरेंट दिया है ना क्वेश्चन, 1 पॉइंट इन कॉमन। तुम्हें पता है बच्चों 3 ईयर बैच जो अंधेरी में है ना, उसमें 37 स्टूडेंट्स है, बोरीवली के भी कुछ बच्चे ऐड हुए हैं अभी। 37 आउट ऑफ 37 को गलत किया है क्वेश्चन, सबको a इक्वल टू 1/3 आया है। ये सेकंड वाला आंसर मिस कर रहे हैं, a लेस देन 0, राइट। फ्लैगशिप 1-2 अंधेरी में मतलब 35 प्लस स्टूडेंट्स लोग को रॉन्ग किया है ये, मतलब a इक्वल टू 1/3 निकाला और छोड़ दिया, फिर आगे गए नहीं, इस कंसेप्ट पे गए नहीं। आज मैंने दादर 1 में लेक्चर लिया, वहां पे गलत बहुत सारे लोगों का, राइट। उधर 3 ईयर में लेक्चर लिया, 50% स्टूडेंट्स, मतलब 4.5 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते एक्चुअली, राइट। 5 स्टूडेंट्स को रॉन्ग था उधर भी। a लेस देन 0 ध्यान ही नहीं दे रहे लोग यार। ये छोटा छोटा मिस्टेक जो ना, ये तुम लोग को IIT में नीचे तो लेके जाता है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये स्टार मार्क लगाना चाहिए यहाँ पे। 1 पॉइंट इन कॉमन एंड टेंजेंशियल डिफरेंट हो गया ना यार, दोनों केसेस डील करने पड़ेंगे ना। सो दिस इज द आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ may I know how many students got the second answer? Just a moment, I'll lower the hands. Yeah, hands तो lower here. कितने लोग को ये second answer आया था? Just raise your hand. 2, only 2. Only 2 students could get the second answer. Okay, that's nice.